button also, sharing. I wish to share the screen as well. Munna. You can make me presenter or maybe make me organizer. Select on my name and then say presenter or can I yeah, I can share now. Perfect. So we'll get started in 1 minute. Probably we can have round of networking we can do. Welcome Anshika. We have big shots here today. Atul has also joined. Sangeeta has also joined. A few of them are from different geographies. So most of you guys are joining from India. आप सब इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं और देश के बाहर से भी हैं कोई? हिमांशु आई सी, सोहन आई सी। यू गाइज आर फ्रॉम इंडिया। आप हिंदी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि हिंदी इंडिया से ही हो। यू कैन बी फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एज वेल। सो अभी नेटवर्किंग का है प्रॉब्ली ओके फ्रॉम इंडिया ओके सो विल गेट स्टार्टेड इन फ्यू मिनट्स we'll wait for a few more minutes to join the people. Anshika, can you hear me? I'm audible? Yeah, you are audible. Okay, perfect. Okay, so we'll have the 1 or 2 minutes and then after that we will get started with the call. Hope my screen is visible. हम इंग्लिश में ही इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, हिंदी में बात करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको। प्रेजेंटेशन मोड में है मेरी स्क्रीन। ओके, so I see a lot of other people are joining. Welcome all once again. This is our fourth session where ये हमारा चौथा सेशन है जहाँ पे हम MCT हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा आइडिया है जो भी MCTs हैं या जो MCT के पाथवे में हैं, जैसे अंशिका है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर MCT। सो इसने रिसेंटली एक फाउंड्री और AI पे काम किया था। मैंने इसका सर्टिफिकेशन देखा था लिंक्डइन पे, तो मैंने इसको अप्रोच किया कि हम एक जॉइंटली सेशन लेते हैं। एंड बाय द वे आई विल लाइक टू थैंक अतिशून्या से अतुल कुमार वर्मा और संगीता ने ज्वाइन किया है, जो हमारे इस पर्टिकुलर सेशंस को स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि एज्योर के क्रेडिट्स दे आर गिविंग अस, कुछ लॉगिन्स हमें देते हैं ताकि हम इन पे डेमो बना सकें। ओके, सो अगर आपने अतिशून्या पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करिए। MCT हिंदी को भी फॉलो कर सकते हैं अपने जानकारी के लिए, और फ्यूचर में अगर कोई भी सेशन हम लेते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। हमारी तरफ से आज मैं MCT ज्वाइन किया है, मैंने एज एन MCT ज्वाइन किया है। मेरे साथ अतुल भी एक MCT हैं और संगीता भी MCT हैं, और आई थिंक अमित जी भी ज्वाइन किए हैं। अच्छा, अमित जी ने ज्वाइन नहीं किया, ही एक्सेप्टेड इट बट ही डिड नॉट ज्वाइन। अमित इज अनदर MCT फ्रॉम अतिशून्या, so we have been joined by that. Okay, so we'll get started with the idea. लिंक्डइन पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है अजियो टॉक्स। यहाँ पे आपको MCT हिंदी के सारे वीडियोस यहीं मिलेंगे। आज का जो सेशन है वो ये है AI एजेंट कैसे बनाएं AI फाउंड्री के थ्रू। जिन लोगों को फाउंड्री नहीं पता है वो आज अंशिका पूरा एक्सप्लेन करेगी। बाय द वे, वेलकम अंशिका एज वेल। अंशिका MCT परस्यू कर रही है। Probably she will be soon an MCT once we propose them for the MCT forum. She is a guest speaker today. और AI फाउंड्री AI Azure का कंपोनेंट है।
AI उस पे कैसे बना सकते हैं, उस पे एजेंट कैसे बना सकते हैं, ये सब डिस्कस करेगी अंशिका गुप्ता, करेंगी अंशिका गुप्ता जी। और अगर आपको फॉलो करना है, यू कैन फॉलो दिस MCT हिंदी पेज फॉर मोर डिटेल। By this, I will hand over the stage to Anshika to deep drive. इन बिटवीन आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट, आप हेसिटेट मत करिए, आप प्लीज़ चैट विंडो पे आप डाल सकते हैं, मैं उनको आंसर करता रहूँगा। और एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो विल टेक अप दोज क्वेश्चंस विच आई एम नॉट एबल टू आंसर इट। अंशिका विल एड्रेस दैट। Yeah, थैंक it's यू। short. Miss. Okay, thank you for the introduction. Let's start. Firstly, I'm sharing my screen. श्योर। Yes. Is this my screen is visible? Right now it is black. Yeah, it is popping up. Yes, it is working well. Okay, now let's start in Hindi. We are using continuously in Hindi. Okay, हाँ, let's हमारे start. लैंग्वेज में हम लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करते हैं ना कस्टमर्स के साथ। मैं भी यूज़ Yeah, करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली इंग्लिश ही निकलती है। बट लेट्स गो बैक टू हिंदी एंड देन डिस्कस इट। yeah, sure. Okay. Okay, so आज का सेशन है हाउ टू क्रिएट एन एआई एजेंट यूजिंग एआई फाउंड्री। आप सॉरी सॉरी, बस आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए अगर इफ इट इज़ yes, पॉसिबल sure. फॉर यू। Yeah, sure, sure. So, welcome all. I am Hanshika Gupta. I am a technical consultant in अतिशून्य और मुझे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365 फाइनेंस ऑपरेशन के साथ लगभग 2 वर्षों का कार्य अनुभव है। एंड मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ और मेरे पास एजूर फंडामेंटल AI 900 MB 500 जैसे सर्टिफिकेशंस हैं। एंड मुझे X++ डेवलपमेंट ERP कस्टमाइजेशन एजूर क्लाउड साथ ही मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के क्षेत्रों में भी कार्य करने का अनुभव है। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं ट्राई करूंगी कि आपको न केवल थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल और रियल टाइम उदाहरणों के माध्यम से भी समझाया जा सके ताकि आप कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सके और अपने करियर में इस्तेमाल कर सके। सो होप सो ये सेशन आपके लिए इंटरेक्टिव और यूजफुल होगा। एंड अगर आप बीच में कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हम बात करेंगे एजूर पर एआई एजेंट डेवलपमेंट के बारे में। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि एजूर क्या है। सो एजूर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देता है जहां हम स्मार्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम कर सकते हैं। ये सिस्टम इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि ये यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखकर सही तरीके से काम करे। लाइक एजूर पे काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें एआई बेस्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद एनवायरनमेंट देते हैं। लाइक जहाँ स्केबिलिटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस पहले से ही मौजूद होती है। ओके, लाइक इसका मतलब यह है कि लाइक एजूर हमें एआई एजेंट डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। लाइक जिससे हम अपने सॉल्यूशन को आसानी से बिल्ड एंड मैनेज भी कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम डिटेल में समझेंगे कि लाइक एआई एजेंट एक्चुअली होते क्या है। ओके, एंड लाइक ये काम कैसे करता है। सो फर्स्टली हम समझते हैं कि एआई एजेंट क्या होते हैं। सो एआई एजेंट ऐसे स्मार्ट प्रोग्राम होते हैं जो अपने आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। मतलब अगर सपोज हर छोटी से छोटी चीज के लिए इन्हें बार बार इंसान के डायरेक्शंस की नीड नहीं होती। ओके, लाइक ये एजेंट डेटा को समझाते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं और फिर इसी के आधार पर हमें सही एक्शन लेने में हेल्प करते हैं। यानी ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते बल्कि सिचुएशन को समझ कर काम करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं जो यूजर से बात करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और तुरंत जवाब या एक्शन देते हैं। सो इसी तरह के इंटेलिजेंट सिस्टम को हम एआई एजेंट्स कहते हैं।
नाउ हम बात करते हैं एआई एजेंट डेवलपमेंट के अलग अलग विकल्पों के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला तरीका है एजोर एआई सर्विसेज का उपयोग करके कस्टम एआई एजेंट बनाना। इससे हम अपनी जरूरत के हिसाब से एआई को डिजाइन करते हैं और उसे स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन करते हैं। दूसरा है विकल्प है प्री बिल्ड मॉडल्स और एपीआई का इस्तेमाल करना। लाइक एजोर हमें कई रेडीमेड एआई मॉडल्स और एपीआईज देता है जिनका उपयोग करके हम जल्दी और आसानी से एआई बेस्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं, लाइक बिना ज्यादा डेवलपमेंट एंड एफर्ट किए। नाउ तीसरा तरीका है एआई मॉडल्स को बिजनेस लॉजिक के साथ जोड़ना। इसका मतलब है कि एआई सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं करता, बल्कि कंपनी के रूल्स और प्रोसेस और वर्क फ्लो को भी फॉलो करते हुए सही डिसीजन लेने में मदद करता है। इसी तरह हमारी रिक्वायरमेंट टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार भी ये एआई एजेंट डेवलपमेंट का सही विकल्प चुन सकते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री एजेंट सर्विसेज के बारे में। सो माइक्रोसॉफ्ट एजेंट सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य है एआई एजेंट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना। इसमें सब कुछ जीरो से बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क मिलता है जिससे डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। यह सर्विस हमें लाइक एजोर सर्विस और हमारे डेटा के साथ आसानी से इंटीग्रेशन करने की भी सुविधा देती है। लाइक हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा मॉडल्स और एजोर सर्विसेज को सीधे एआई एजेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री एजेंट सर्विस की मदद से हम सिक्योर और स्केलेबल एआई एजेंट डेवलपमेंट मदद कर सकते हैं एंड डेवलप कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे यूजर्स या वर्कलोड बढ़ता है और एआई एजेंट भी सेफ्टी और स्मूथली स्केल कर सकता है। सो इन सिंपल टर्म्स हम समझ सकते हैं कि यह सर्विस हमें एआई एजेंट को जल्दी, सुरक्षित और इंटरप्राइज लेवल पर डिप्लॉय करने में भी मदद कर सकती है। आपको लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अब यहाँ हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक फ्लो में समझते हैं। सबसे पहले एआई एजेंट स्मार्ट और ऑटोमेटेड समाधान देते हैं, यानी ये सिस्टम इंसान को आसान बनाने के लिए खुद से सोच समझकर काम करते हैं और रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं। इसी वजह से एजोर एआई एआई एजेंट डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। सो एजोर हमें पावरफुल टूल, सिक्योर एनवायरनमेंट और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जिससे एआई एजेंट्स को डेवलप और मैनेज करना आसान हो जाता है। और जब हम एश्योर के साथ माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री एजेंट सर्विस का उपयोग करते हैं तो एआई एजेंट के विकास की प्रक्रिया को और भी हम लाइक इजी बना सकते हैं एंड ये फास्ट भी बन सकता है। मतलब हम कम समय में कम एफर्ट के साथ इंटरप्राइज लेवल एआई एजेंट्स तैयार किए जा सकते हैं। इस तरह ये तीनों पॉइंट्स मिलकर हमें इफिशिएंट और स्केलेबल एआई सॉल्यूशन बनाने में मदद करते हैं। सो दैट इज द यह सब कुछ जो था वह था कि हम एजर फाउंड्री क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री क्या होता है, हम एजेंट कैसे बनाते हैं। नाउ लेट्स सी हम प्रैक्टिकली एआई एजेंट बना कैसे सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सबसे पहले हमें इसके लिए एजर पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। सो दिस इज portal.azure.login। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एजर पे जाइए। यहाँ बहुत सारी सर्विसेज देख सकते हैं हम जो काम करती है यहाँ पे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा प्रिविलेज रिसोर्सेज ग्रुप। सो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री पे क्लिक करिए। फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट ए फाउंड्री रिसोर्सेज। तो हमें क्रिएट ए रिसोर्स पे क्लिक करना होगा।
Now choose the subscription. So my subscription is D365 FO MPN. So I'm choosing this one and we have to create a resource group. So इसके लिए आपको एक resource group या तो हम create कर सकते हैं या हम existing groups को भी choose कर सकते हैं. तो मैं अभी के लिए AI agent RG resources group को choose कर रही हूँ. Now we have to write the resource group name. So I am using Pratik Shunya. ऑल्सो इसके बाद हमें रीजन भी चूज करना होता है. तो हम अभी के लिए ईस्ट यूएस चूज कर रहे हैं एंड उसके लिए जो भी सर्विस इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं स्टोरेज नेटवर्क एंड आइडेंटिटी इंक्रिप्शन टैग्स उसको हम डिफॉल्ट पे ही रखते हैं एंड आफ्टर दैट वी हम इसको रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं. सो आई ऑलरेडी did this step previously. So this is my new resource group, Microsoft Foundry. सो ये इस तरीके से आप एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं. नाउ हमें अगर माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के द्वारा एआई एजेंट चूज बनाना है तो हम गो टू फाउंड्री पोर्टल पे क्लिक करेंगे. तो गो टू फाउंड्री पोर्टल. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रो डिफॉल्ट ये मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है. सो हम इससे नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं. सो वी कैन रीनेम दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर and also we can add description like default project related with the resources and we can create new project. So I'm using this existing project. Now हमें agents पे क्लिक करना होगा. यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं जिनके अलग अलग उपयोग है. तो हमें एजेंट बनाने के लिए न्यू एजेंट पे क्लिक करना होगा एंड नाउ क्लिक द न्यू एजेंट. Here we can see many options like agent ID, agent name, deployment, instruction. So this is agent ID and here like हमें यहाँ पे agent नाम लिखना होगा. So यहाँ मैं agent नाम लिख रही हूँ. ये है this is okay. I'm right. Session helper. I'm creating a session helper agent. इसके साथ ही हमें डिप्लॉयमेंट में वर्जन चूज करना होता है. यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्जन्स मिलते हैं लाइक GPT-4.0 मिनी एंड GPT-5. सो हम यहाँ अलग अलग वर्जन चूज कर सकते हैं. सो इसके लिए मैंने GPT-4.0 और GPT-4.0 मिनी चूज किया है. इसके यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे लाइक हमें हमारे एजेंट को किस टाइप का हम चाहते हैं कि किस टाइप का डेटा वो हमें शो करे, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं. सो यहाँ हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं URI helpful you are a helpful AI assistant. You answer questions related to AI sessions. Microsoft AI Foundry. Sorry. Business AI concepts. ओके एंड इसके बाद हमें एजेंट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है. सो दिस इज ऑप्शनल. वी कैन राइट हेयर
डिस्क्रिप्शंस और नॉट। उसके बाद हमें नॉलेज का ऑप्शन मिलता है। सो नॉलेज पे जब हम क्लिक करेंगे, गो टू ऐड बटन एंड हेयर वी कैन सी दैट अपलोड फाइल्स। सो नाउ क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स एंड यहाँ से हम हमारे सिस्टम की लोकल फाइल अपलोड कर सकते हैं। सो सेशन नॉलेज ओपन, नाउ अपलोड एंड सेव। यहाँ पे हम एक्शंस देख सकते हैं, तो इसके बाद ऐड पे क्लिक कीजिए एंड हेयर यू कैन सी कोड इंटरप्रेटर एंड ओपनएआई स्पेसिफिक रूल एंड एजोर लॉजिक एप्स। सो यहाँ पे सभी का अलग अलग उपयोग है, तो हम अभी के लिए कोड इंटरप्रेटर चूज कर रहे हैं एंड सेव दिस ऑप्शन। नाउ इसके बाद हमें ट्राई इन प्लेग्राउंड पे क्लिक करना होगा टू टेस्ट आवर एजेंट। Start chatting. So now we can ask like session कब है? So session कब है? होप सो ये हिंदी में भी जवाब दे, क्योंकि हम हिंदी एनसीटी पे हैं। Okay, so here we can see this all details about the session, like we have AI agent using AI Foundry session date. So this is the whole process of how can we create a AI agent from Microsoft Foundry. So आप जितना इसको train करोगे ना, like deploy, जितना अच्छा हम इसको instruction देंगे, वो हमें उतना ही अच्छा जवाब देगा। So this is the process of like create an AI agent. Who's the guest? Okay, so now we can say this, the session detail provider not specify, because जो हमने फाइल सेलेक्ट की है ना, उसमें हमने जो मैंने डेटा डाला है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि सेशन कौन लेने वाला है, गेस्ट स्पीकर कौन है। उसमें सिर्फ हमने डेटा डाला है कि सेशन का टाइटल ये है, डेट ये है, टाइम ये है। सो इट्स ऑल अप टू, आप जितना अच्छा डेटा उसको दोगे तो उतना अच्छा ही हमारा एआई एजेंट काम करेगा। Yes, so this is the whole process of AI agent. Now करेक्ट। तो आप में से जो एक भी एक क्वेश्चन, सॉरी, या यस। एक सो एक क्वेश्चन आया था कि ये जो वेयर फ्रॉम वेयर इट इज एक्चुअली पिकिंग द नॉलेज। ओके, सो वेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर इट इज पिकिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये नॉलेज या ये इंफॉर्मेशन कहाँ से पिक कर रहा है? जब हमने नॉलेज के लिए उसमें अपलोड मारी थी फाइल, वो हाँ जी, बेसिकली वो पिक करता है ना? सो दैट्स द यस। आंसर टू इट। और यहाँ पे आप नॉलेज बेस एक शेयर पॉइंट भी हो सकता है, आपका कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई एश्योर डेटाबेस हो सकता है। इनफैक्ट आपका कोई, अगर आपके पास नॉलेज आर्टिकल प्लेटफॉर्म है जैसे सर्विस नाउ है, तो वहाँ से भी आप इसको डेटा दे सकते हो। कैन वी अपलोड वन नोट डॉक्यूमेंट एज वेल? आई थिंक इट इज़ अ गुड गुड क्वेश्चन। वन नोट में, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स वन नोट document with which has username and the password. So I think that it might not pick up, but you can put that as a text file और document doc files बना के आप attach कर सकते हो। could be हमें ये देखना पड़ेगा। और vector database as created automatically, Anshika, do you know vector databases are also created automatically? I think it is getting created, no? Or it is picking up the from the standard model? Anshika? Vector database also created automatically. Yeah, this is the question which I may have got. Yes, यस यस, जब हम एजोर एआई फाउंड्री में नॉलेज फाइल अपलोड करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वेक्टर डेटाबेस क्रिएट कर देता है। लाइक हमें मैन्युअली वेक्टर डेटाबेस बनाना या मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। सो यस वी कैन। Okay, एंड इफ okay. यू वांट टू नो अबाउट द प्रोसेस, तो यह फाइल को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके लाइक वेक्टर स्टोर में सेव किया जाता है, जिससे एजेंट रिलेवेंट आंसर रिट्राइव कर सकता है। Mhm. सो या, Can यस वी you कैन। show us in the environment Azure portal पे या कहीं पे दिखा सकते हैं कुछ यूजर्स को? या श्योर, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके,
हमारे पास एक और क्वेश्चन है विच वी विल टेक इट आफ्टर दिस. हाउ डज इट इंटीग्रेट विद द डायनामिक्स 365 एमसीपी सर्वर? एमसीपी सर्वर्स के साथ जो इंटीग्रेशन है, इट इज़ नॉट ए इंटीग्रेशन. डायनामिक्स 365 एमसीपी सर्वर is a connector actually. I will give you the answer to this. Don't worry. मेरी स्क्रीन शो हो रही है. Hmm, अभी तो नहीं. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. आई थिंक इज दिस विजिबल? दिस इज विजिबल नाउ. It's loading. Yep. Yeah, it is visible. Okay, so it's already, it shows this. Give me a minute. Okay, the process is the same. Like when we create the when we add the this file. Yeah, it is actually creating the create a vector scale, vector store. Yeah, it is creating Yeah, automatically. it's creating automatically because जो vector database automatically create हो जाता है like in the back end. We don't need to Correct. do manually. So this is the process. Perfect. और भी एक कुछ सवाल है हमारे पास. जी, just शिवाजी ने पूछा है. शिवाजी पूछ रहे हैं, कैन वी यूज एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज along with the Azure Foundry? एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज होती हैं एज्योर में, फाउंड्री के साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है अंशिका. Azure Foundry like होती है like Azure Foundry Azure Community Service के साथ seamlessly integrate होता है like firstly AI Foundry agent के लिए orchestration layer का काम करता है और AI और Azure Community Service जैसे Vision, Speech, Language, OCR को हम plugin की तरह यूज कर सकते हैं. For example हम स्पीच सर्विस से वॉइस इनपुट ले सकते हैं, OCR से डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं और फाउंड्री एजेंट्स अस डेटा से रीजनिंग प्लस रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं. सो यस, सो फाउंड्री प्लस कॉन्टिटी सर्विसेज टुगेदर एक कंप्लीट एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशन बनाते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. जो महेश्वर का क्वेश्चन था. Yeah, there is another one question more. OCR handwritten also supported. Anshika, there is a new question from the user सी named KN. Okay, now it's showing me. Yes, like Azure Cognitive Services handwritten OCR पे support करता है, as I mentioned previously. So Azure AI Vision and document intelligence handwritten और text को image और scan document और से accurately access कर सकते हैं. Like for example, OCR like handwritten forms हो गया, notes, invoices या prescription को OCR करके AI Foundry agent process कर सकते हैं. Mhm. Okay, yeah, makes sense, makes sense. User KN, do you have more questions about it? I think we have more one another question. How does it integrate to? Yeah, so let's take the final last question, like in the queue, last question. Probably we may have more questions around. So, do you know, Anshika, about this? How does it integrate to Dynamics 365 MCP server? Foundry का कुछ connection है? Yeah, like Azure AI Foundry agent MCP server के through D365 API से integrate होते हैं, but for this time I don't much knowledge about this. So Yeah, yeah, I correct. will. For the MCP servers, जो मुझे पता है, we can utilize the Copilot actually. You can go to the Yeah. Copilot Studio and then build up your code there, and you can connect the Dynamics 365 MCP servers. पहले कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मुझे भी नहीं पता था MCP सर्वर क्या हमें बनाना होता है. तो आप बना भी सकते हो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए, एक MCP सर्वर आप बना सकते हो. बट Dynamics 365 का
MCP server is already there. Already Microsoft has created it. Okay, you can use that within your Copilot Studio to fetch the records. So जैसे आपका procurement and sourcing module है, वहाँ से अगर आपको मान लो आप कोशिश करना चाहते हो कि परचेज रिक्विजिशन वहीं से रेस हो जाए, तो अगर यूज़र कोई चैट कर रहा है, लिख रहा है कि भाई मेरा लैपटॉप टूट गया, तो वो ऑप्शन देगा कि ठीक है, आपका टूट गया, कोई बात नहीं, हमारे पास ये 4 लैपटॉप है या 10 लैपटॉप है रिप्लेसमेंट के लिए। उस 10 में से आपको कौन सा चाहिए, आप फिर लिखोगे मुझे डेल का चाहिए, लेनोवो का चाहिए, मुझे मैकबुक चाहिए। वो लिखने के बाद जब आप टाइप कर दोगे, इट विल अगेन रिस्पॉन्ड यू दैट ओके, अगर अमाउंट $5,000 $3,000 से ज़्यादा हुआ, उस ब्रैकेट में हुआ 3,000 से कम है, ऑटोमेटिकली अप्रूव होके आपको मेल चला जाएगा, ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी। ठीक है, अगर वही लैपटॉप 5,000 से ज़्यादा है तो एक अप्रूवल जाएगा मैनेजर को, आप भी सीसी में होगे, जाएगा विद द रीज़न कि हमें आपको लैपटॉप क्यों देना है। उसके बाद वंस इट इज़ अप्रूव्ड बेस्ड ऑन द ऑटोमेटिक प्रोसेस, इट विल देन गिव यू the shipping and tracking ID. If it is approved, it will give you. So basically MCP servers को हम कनेक्ट करके उसके थ्रू हम कर रहे हैं। ठीक है, वी आर डूइंग इट ऑन दैट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आज के लिए? अभी हमारे पास टाइम है। ओके, आई थिंक इट इज़ अ फीडबैक। वंडरफul session, practical to the point and not much on the theory, as there are other courses as well. Yes, there are other courses which are having a lot of theories around it to offer. Good, thank you. We just created an AI agent using the Azure Foundry. How to deploy this to others to use? So this is something a good question. Sohan ने पूछा है, we just created this agent using the AI Foundry in this session. How to deploy this for others to use? तो हमने ये अभी तो हमने Azure पोर्टल के अंदर डिप्लॉय कर दिया। अब यही एजेंट किसी को यूज करना है तो कैसे करेंगे अंशिका जी? Yes, like once the agent is ready in Azure AI Foundry, we can deploy it as an endpoint and make it available for others to use. Like इसका पूरा process होता है. Like firstly, you have to deploy the agent from Azure AI Foundry, expose it via REST API and endpoint, and integrate it with channels like web app, power apps, and like themes and custom applications. So for example, like same agent can be embedded into a website, internal portal, or Microsoft Teams for end users. So once it is deployed, the agent become a reusable AI service that others can securely consume. And Okay. if you guys like आप चाहिए कि आपको पूरा 1-to-1 step by step, I will show you in next session. Hope so. Okay, so there is one more question, follow-up question from Maheshwar. To deploy some business processes in Dynamics 365 F4, we have only option to develop in Copilot Studio connected to MCP server. Yes, वहीं से आपको ऑप्शन है, वहाँ से आपको बिजनेस प्रोसेसेस आप बना सकते हो। अभी तक जितना मुझे पता है, वहाँ पे नॉलेज आर्टिकल डाल सकते हो, वहाँ पे शेयर पॉइंट फोल्डर को अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास मान लीजिए कोई शेयर पॉइंट फोल्डर में आपके पास एक एक्सेल शीट है जो हमेशा अपडेट होती रहती है विद द लेटेस्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, देन यस, this is possible. Can you give this to others to as a software as a service means? Yeah, Anshika, question for you. Can we give this to this one? Can we give this to the other service names? Are you there, Wish? Yes, yes, sure, you can. Like the same approach, can be extended as a shared internal services as even a SaaS style solution with the like proper access control, security, and data isolation handled by Azure also.
Okay, so basically the question is around that this particular agent which we have created, can we sell it as a software as a service? So yes, I think it should be, you should be Yes, able to yeah. create it. You should be able to do Mhm. it. What are the other use cases for using the AI Azure Foundry? बहुत सारे हैं. आप वीडियो बना सकते हैं, आप अपनी खुद की वीडियो लाइब्रेरी, यू नो वीडियो लाइब्रेरीज बना सकते हैं, ऑडियो लाइब्रेरीज बना सकते हैं. यू कैन बिल्ड अप योर ओन इमेजरी इन्वायरमेंट ओवर देयर. इमेज बना सकते हैं आप वहाँ पे, है ना. वन नोट, डॉक्टर उमेश, कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट्स ऑन द पाथ ऑफ सेलेक्ट बिटवीन building agent on the Copilot Studio versus building agent in the AI Foundry? I believe Copilot Studio would be handy for building agents aimed to automate with respect to finance operation application. What is the use case of building Azure Foundry based agents in the for Dynamics 365 still? So आपने बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया है, अमित. Basically Dynamics 365 के लिए Copilot Studio is the go to market, and it also has the MCP servers inbuilt. ठीक है, तो I think वहाँ से हम sorted out है. What is the use case to build AI Foundry? Yeah, Azure Foundry is basically towards the Azure ecosystem. ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा डीप ड्राइव करोगे AI Foundry, Copilot AI agents, तो आप ये देखोगे कि Azure का, if it is an specific business application, then it is Copilot Studio. And when it is coming as a SaaS solution, PaaS solution, IaaS solution, then it is towards the Azure Foundry. Okay, so this is the main difference between them. पंकज जी पूछ रहे हैं, अमित, डज इट, आपके पास ये क्वेश्चन का जवाब मिला, मतलब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया ना? If you have the follow Perfectly, up. Umesh, because at the same time, I also thought of an idea where we could practically use Foundry-based agent. Let's say, for example, if we need to push the e-invoice that originates from D365 FO with based model, but then if we need to push this to the network service provider agent, then we could use probably AI Foundry for this push service. But yeah, thanks for the clarification. Yeah, yes. The file that you have uploaded must have all the questions and answers so that it works. How the agent can give answers beyond these questions? No, beyond these questions, it is not enough. It is not a chat GPT which will give you, keep on giving the answer, because it has, chat GPT has a big large model. हमने यहाँ पे सिर्फ एक फाइल दी है, छोटे से फाइल में आप बोल रहे हो कि भाई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो, तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आपके लिए उसको नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, पूरा नॉलेज बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, आप हाई लिखोगे, वो भी हाई लिखेगा, वो पूछ लेगा व्हाट इज योर नेम. तो ये सब भी हम उसको कन्वर्सेशन, एज ए कन्वर्सेशन वी कैन डू दैट. या केएन, प्लीज गो अहेड. Umesh, one last question. So it will give only answers based on the documents that we uploaded, Anshika, or will it give any other answers also from the LLM? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज आर्टिकल आपने डाला है, जो फाइल्स डाला है, उसी में से वो आपको आंसर देगा, क्योंकि वो बनाया ही उस लिए है. हमने उसी पर्पस स्पेसिफिकली अपने काम के लिए आपने बनाया है. ये नहीं कि पूरी दुनिया की जानकारी आपको वो देगा ना, नॉट पॉसिबल. अच्छा, वो रैग मतलब उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो रैग वाला प्रोसेस फॉलो कर रहा है. करेक्ट. ओके. Okay, I think we had a good discussion. We have finished this session in probably 40 minutes. 20 मिनट हमारे पास अभी भी हैं. कुछ क्वेश्चंस है तो we can stick around, otherwise we can wind up the call today. And I think I really thank you, Anshika, for your time, from precious time you have been giving us. Thank you, Sangeeta, for sponsoring our event. Thank you those who have joined. मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और फिर से कोशिश करूंगा कि एक नया सेशन लेके आऊँ आपके पास. थैंक यू. Thank you, Umesh. Thank Thank you you, so much, Anshika. everyone. Thank you. And Thank you, thank you, guys. Umesh, for this opportunity. Thank you, everyone. Thank you, all of you. Thank you, Umesh. Thank you, Anshika. Thank you, Umesh, for the Thank wonderful you. session. Thanks. Bye-bye.